આગળ વાત કરીએ તો જૂનાગઢમાં મહાશિવરાત્રીને લઈને તૈયારીઓ તેજ થઈ છે, તો તેની સાથે જ પોલીસે પણ ચુસ્ત પોલીસનો બંદોબસ્ત ગોઠવ્યો છે। કુલ 2200 જેટલા પોલીસના અધિકારીઓ ત્યાં જોવા મળશે। આ વચ્ચે તમને જણાવી દઈએ કે 1200 પોલીસકર્મી ત્યાં ફરજ નિભાવવાના છે, જેમાં 12 ડીવાયએસપી, 22 પીઆઈ, 123 જેટલા પીએસઆઈ, એસઆરપીની ટીમ સહિત 1029 પોલીસના જવાનો, જીઆરડી સહિતના તમામ પોલીસકર્મીઓ પણ ફરજ નિભાવવાના છે, તો તેની સાથે સીસીટીવી કેમેરાથી સજ્જ જોવા મળશે। आगामी महाशिवरात्रि मेळो भवनाथ खाते योजानार छे। आप सौ जाणो छो एमां विशाळ संख्यामां श्रद्धाळुओ अहीं आवता होय छे। घणा बधा नक्षत्रो लागता होय छे अने श्रद्धाळुओ भवनाथ महादेवना दर्शन करवा, भजन अने भोजननो जे मेळो छे ए एन्जॉय करवा माटे आवता होय छे। आ तमाम यात्राळुओ सारी रीते अहीं आवी अने आ बधी सुविधानो उपयोग करी शके एना माटे महानगरपालिका, जिल्ला तंत्र और पोलीस विभाग तरफथी दर वखत तैयारीओ करवामां आवती होय छे। ए जे तैयारीओ विषे आप सौ जाणो छो कि पार्किंगनी जग्याओ क्यां छे, साइन बोर्ड्स क्यां लगाववाना होय छे, कया प्रकारनी पोलीसना बंदोबस्त होय छे। पण आ वखते खास करीने माननीय गुजरात सरकार, मुख्यमंत्रीश्री, अमारा गृहमंत्रीश्री अने अमारा डीजीपीश्री साहेबनी जे लागणी छे दर वखत के वधुमां वधु टेक्नोलॉजीनो उपयोग थाय जेथी करीने आपणे सारी सुविधाओ पूरी पाडी शकीए। तो ए अनुसंधाने 3 इनिशिएटिव जूनागढ़ पुलिस द्वारा लेवामां आवेला छे। आ शिवरात्रिना मेळा माटे जूनागढ़ पोलीस द्वारा एक विशाळ पोलीस बंदोबस्तनुं आयोजन करवामां आवेलुं छे। बंदोबस्तनी वात करीए तो समग्र बंदोबस्तनी अंदर 12 डीवायएसपी, 22 पीआई, 123 पीएसआई, 1029 पोलीस, टीआरबीना 130 जवान, एसआरपीनी 2 कंपनीओ, होमगार्डना 529 जवानों, जीआरडीना 626 અને બીડીડીએસની 3 ટીમો સમગ્ર બંદોબસ્તનું તારીખ 21થી લઈ અને 26 સુધી ડિપ્લોયમેન્ટ અમારું રહેશે। સમગ્ર બંદોબસ્તને 5 ઝોનની અંદર વિભાજન કરવામાં આવેલું છે। ખાસ કરીને આ વર્ષે જે નવા ઇનિશિયેટિવની વાત કરીએ તો જૂનાગઢ પોલીસ દ્વારા નાગરિકોની અને શ્રદ્ધાળુઓની સલામતી અને સુખાકારી માટે અમે 3 નવા ઇનિશિયેટિવ આ બંદોબસ્તની અંદર ઉમેરેલા છે। માનનીય આઈજીપી સાહેબે જેમ વાત કરી તો આ મેળાની અંદર આવતા લોકોના ઈ પાસ આપવા માટેની એક સુવિધા અમે આ વખતે સમાવેશ કરેલ છે। આ ઉપરાંત પોલીસને બંદોબસ્તની વહેંચણી કરવા માટેની એક ઈ બંદોબસ્ત એપ્લિકેશન ડેવલપ કરી છે અને બહારથી આવતા શ્રદ્ધાળુઓને પાર્કિંગ માટે ગાઈડન્સ મળી શકે એના માટે અમે એક એઆઈ બેઝ એક સોલ્યુશન ડેવલપ કરેલું છે। તો લોકોને પણ અમે અપીલ કરીએ છીએ કે અન્ય જિલ્લામાંથી જે લોકો આવે છે એ વધુમાં વધુ આ એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ કરી અને પાર્કિંગ સ્પેસ મેળવવા માટેનો ઉપયોગ करे। जूनागढ़ महाशिवरात्रि 2025 के अंदर बहुत सारे लोग बाहर जिलों से आते हैं, तो यहाँ पे आके जो आदमी बाहर से आता है उसको आइडिया नहीं होता वो पार्किंग के लिए कहाँ जाए, और उसके कारण क्या होता है कि वो शहर में ही भीड़ बढ़ जाती है और एक मिसमैनेजमेंट हो जाता है। तो उसके लिए हमने एक इजी सॉल्यूशन डेवलप किया है जिसके अंदर आपको एक क्यूआर कोड मिलेगा। उसको अगर आप स्कैन करते हैं तो आपको एक व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा। उसको आप खोलते हैं, आपको उस पर हाई भेजना है, वो नीचे अपने आप लिखा रहेगा, बस आपको सेंड करना है। तो वो आपसे पूछेगा कि आपका जिला आप कहाँ से आ रहे हैं, और जब आप जिले आपने दबा देंगे तो आपको वो जूनागढ़ में पार्किंग स्पॉट मैप के साथ दे देगा, जिसको आपको दबा के आप वहाँ पहुँच सकते हैं। तो इससे जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनका भी ईजी रहेगा और शहर के अंदर मैनेजमेंट बेटर है। आगामी महाशिवरात्रि मेळो भवनाथ खाते योजानार छे। आप सौ जाणो छो एमां विशाळ संख्यामां श्रद्धाळुओ अहीं आवता होय छे। घणा बधा नक्षत्रो लागता होय छे अने श्रद्धाळुओ भवनाथ महादेवना दर्शन करवा, भजन अने भोजननो जे मेळो छे ए एन्जॉय करवा माटे आवता होय छे। आ तमाम यात्राळुओ सारी रीते अहीं आवी अने आ बधी सुविधानो उपयोग करी शके एना माटे महानगरपालिका,